Okay, just let me explain this again. Damped oscillation means amplitude of the oscillating body will decrease because of the presence of the viscous medium here. Damping force is taken as a minus BV. Minus means opposite direction में velocity अगर downward है तो damping force will be upward. If the rock is going up, viscous force will be downward, opposite. So minus BV, damping force will be there. B is the positive damping constant. So there will be two forces on the object. एक तो उसका restoring force Kx will be there, and damping force will also be in same direction. Both are added up. So net force will be this, and mass into F को mass into acceleration लिख सकते हैं, which is acceleration is double derivative of displacement. तो ये इक्वेशन बनेगी, उसका solution ये है, and जो new angular frequency है omega dash, which will be this. The solution is not in our course. तो ये new angular frequency will be K by M under root के अंदर minus this one also. तो K by M तो without damping में रहती है frequency, but यहाँ पे minus हो गई. Frequency has gone down. Time period will be increasing because both are reciprocal to each other. Frequency decrease हो गई because of this minus value coming here, and amplitude will also be decreasing slowly over the period of time, which is called damping oscillation. Okay. Now, to maintain the constant oscillation, we have to apply the force. As you have experienced where in the garden swing, the most familiar example of forced oscillation is when child in the garden swing periodically places his feet against the ground, or someone else periodically gives a child a push to maintain the oscillation. Such force is given by periodic force रहता है. Suppose periodic force is given by this relation. तो ये force भी उसमें equation में add हो जाएगा अभी. Already we have seen this equation in previous one, damped oscillation. To maintain the oscillation, this periodic force, this is its peak value, or omega d is the driving frequency, है ना? तो ये periodic force लगाते हैं, intermittent force में. तो ये force भी लग जाएगा. अभी whole thing becomes like this, and जिसका solution ये हो जाएगा. Solution will be this one. Okay. So this is again directly written in our textbook. How the solution comes, you can skip, and those who are going for competitive examination, they can just remember these things. Not this. ये final ये learn करना पड़ेगा. Now amplitude, where T is that, okay. Let's see what are the terms. ये final equation आ गई displacement की in the forced oscillation. Got it? तो ये तो already we have seen up to here. Damping force भी लग गया. इसका solution is this, which is beyond our course. A will be the amplitude of this forced oscillation, and omega d is the driving frequency. So displacement of forced oscillation depends upon the driving frequency, and some phase difference may also come, and amplitude. So T, where T is the time measured from moment when we apply the periodic force. T क्या है? जब हमने force लगाना शुरू किया, वहां से measure करना है. Amplitude is the function of force frequency. Amplitude जो है force frequency, and amplitude is the function of force frequency omega d. Amplitude is the function. एक मिनट. Amplitude ये छोड़ दो. Just FD is the driving frequency or force frequency. Driving frequency ऊपर लिखा है शायद हमने, दोबारा नहीं लिख रहे हैं. ओमेगा क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इन दिस केस ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ के बाई एम. हमने जो डिराइव किया था पहले, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, और ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है. एम्पलीट्यूड का सोल्यूशन ये आता है. देखो, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स. नीचे देखो ये है
mass of the oscillating body, natural frequency of the oscillating body, driving frequency, here also driving frequency, B is the damping constant, whole की power 1/2 है. तो यहाँ पर अपने significant मतलब important point क्या है यहाँ पर, ये term देखो, this is of our use. Those who are going for JEE and NEET, उनको ये relation they may need it, ठीक है, but other student can skip these formulas. तो short note में क्या लिखेंगे? Force oscillation is one in which we have to apply the periodic force to maintain the oscillation. Some external force, you can give the example, this example only, child swinging in the swing in the garden. All right. So these things can be left. Now amplitude of force oscillation is given by this relation. ठीक है, समझ में आ गई? F नॉट क्या है? जो फोर्स लगा रहे हैं उसको पुश कर रहे हैं, या फिर he himself is applying the force on the ground, उसकी peak value. Now comes the resonance. Resonance क्या होगा? Let us see what is the resonance. Any idea about the resonance in the simple harmonic motion or in the forced oscillation? देखो रेजोनेंस में क्या होता है, अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो ये टर्म जो है विल बिकम जीरो, एम्पलीट्यूड बिकम वेरी हाई, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, that is called driving frequency, is equal to natural frequency, then amplitude is very high. It is called the resonance of simple harmonic motion. So that's what is the resonance. तो यहाँ पर देखो, you can see when the driving frequency is equal to natural frequency. यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं एक मिनट. When driving frequency मतलब जो फोर्स लगा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी is equal to natural frequency of body, then amplitude is maximum, and if B is very small, damping force भी बहुत कम कर दिया हमने, then A will be further more. तो ये तो टर्म जीरो हो गया. A will be how much? ऊपर F नॉट है, नीचे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय डैम्पिंग फैक्टर. डैम्पिंग फैक्टर भी अगर आपने कम कर लिया तो एम्पलीट्यूड विल बी वेरी हाई. This phenomena of increase in the amplitude when driving frequency is equal to natural frequency is called resonance. Now you can see resonance में amplitude बहुत high हो जाता है. देखो अगर मैं डैम्पिंग फोर्स, देखो डैम्पिंग कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, देखो this side is the ratio of driving frequency to the natural frequency. Can you see? Driving frequency to the natural frequency 1 है, मतलब दोनों इक्वल हो गए. इधर एम्पलीट्यूड है तो डैम्पिंग फैक्टर 140 ग्राम पर सेकंड है, तो एम्पलीट्यूड इतना बढ़ रहा है. अगर डैम्पिंग फैक्टर हमने आधा करा लिया तो एम्पलीट्यूड फर्दर गोज अप. डैम्पिंग फैक्टर और कम किया तो एम्पलीट्यूड फर्दर गोज अप. दैट्स व्हाट इज द रेजोनेंस. ठीक है, तो रेजोनेंस में आप क्या लिखेंगे, उसमें आपको फार्मूला नहीं, ये सब फार्मूले छोड़ देना है, बस इतना लिखना है. दोज हु आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, अपना नॉर्मल आपके टर्म एग्जामिनेशन में, तो जस्ट यू कैन राइट when the frequency of applied force is equal to natural frequency of oscillating body, amplitude will be very high, object will start oscillating with the high amplitude. और ये ग्राफ ऐसे बना देना है इस तरह से. Got it? तो एग्जाम्पल रेजोनेंस का कोई दे सकते हैं. सोल्जर्स आर asked to break the marching when approaching to the some what is called bridge.
ब्रिज पे जब मार्चिंग करते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अगर वो पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो it will start oscillating with the larger amplitude and it may collapse also. Bridge may collapse also, you know, that natural frequency and force frequency बराबर हो गई तो. Buildings earthquake में क्या होता है? Suppose the oscillation of earth, frequency of oscillation of earth matches with the natural frequency of any building, that will collapse first because उसका oscillation बढ़ जाएगा, abnormally high हो जाएगा, that building will collapse first. ये एग्जांपल दिए. इवन देखो ये दिस आई एम गोइंग टू शो यू दिस एक्सपेरिमेंट. इसका रिकॉर्डिंग डेमो दिखा रहा हूं मैं आपको, रिकॉर्डेड है ना. तो देखिए ये एक पेंडुलम है, कॉमन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. दिस इज द सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन. अगर आप इसको ऑसिलेट कराइए तो फोर्थ वाला इसकी जो ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेट करेगा, ये अपनी फ्रीक्वेंसी इधर ट्रांसफर करेगा, सबको एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा. तो ये फोर्थ उसके बराबर है, तो इसकी फोर्थ की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएंगे. दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड एंड दीज विल बी जस्ट वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड दे विल ऑसिलेट. तो इसका और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा. तो दिस आई एम गोइंग टू शो यू. और ये भी आपका ये दैट ऑडियो से दिस द ऑडियो साउंड फ्रीक्वेंसी से how this wine glass is going to break, because इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो it will start oscillating with the larger amplitude and it will break without direct contact, without that, only with the oscillations it will break. We are going to see this. Soldiers का मैंने बता दिया आपको, they are asked to break the marching before approaching the what is called bridge. ठीक है. तो these three footage we are going to see, रेजोनेंस का और इसका रेजोनेंस का. ठीक है. तो वी सब न्यूमेरिकल आल्सो वी हैव टू डू. ठीक है. न्यूमेरिकल कल करके फिनिश कर देंगे इसको. वी हैव सब न्यूमेरिकल्स पेंडिंग हियर. तो आई कैन शो यू द, एक मिनट देखता हूँ और कुछ है. ओके चलो देखते हैं. I do switch off the recording because there will be copyright act.